Good afternoon. Today I am back with you with another set of idioms and phrases, part 2. And this will go on to part 3 and 4 because you need to know a lot of idioms. So let us take a look at the second set of idioms and phrases which I have for you with the meaning and the sentences. So let us discuss. The first idiom today is leave no stone unturned. To leave no stone unturned means to work really hard. जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में एक एक पत्थर को उठा उठा के देखा जा रहा है. इट मीन्स हर पॉसिबल जगह पर मेहनत की जा रही है, डिटेल किया जा रहा है. To look everywhere without missing a spot, or to take every effort possible to achieve something. वो हर मेहनत जो चाहिए वो आप किसी काम में जब जुड़ जाते हैं तब आप कोई भी पत्थर को उल्टे बिना नहीं रहते हैं. To leave no stone unturned means to work really hard. The police were determined not to leave any stone unturned. So पुलिस उन्होंने क्या सोच लिया था कि किसी भी तरह से कल्प्रिट को या दोषी को पकड़ लेना है. They will look everywhere to find the victim, to find the culprit, right? The next is clouds on the horizon. Clouds on the horizon means there are problem. कहीं doubts है, कहीं दिक्कत है, कहीं परेशानी है, कहीं doubtful है. Something is missing somewhere. कहीं कुछ problem है. तो horizon पे clouds है, बादल छाए रहते हैं. तो लगता है कहीं कुछ आसमान साफ नहीं है, बादल छाए हुए हैं. It means idioms का मतलब होता है some problems or some trouble. Father sensed that there were multiple clouds on the horizon when I didn't return home on time. तो फादर बहुत परेशान थे, कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया होगा, इसलिए देर हो रही है, इसलिए मुझे लेट क्यों हो रहा है. इसके लिए फादर परेशान थे कि जरूर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा. सो ही वाज सेंसिंग, वो समझ रहे थे देयर वर मल्टीपल क्लाउड्स ऑन द होराइजन, काफी परेशानी होगी या कुछ परेशानी हुई होगी जिसकी वजह से हम समय पर घर नहीं पहुंच पा रहे हैं. Clouds on the horizon, idioms which means problems or troubles. The next is blessing in disguise. बहुत ही common idioms है. Blessing मतलब ये आशीर्वाद, वरदान. Disguise का मतलब भेष बदल के आशीर्वाद आपके लिए है. कहीं कोई कुछ आपको लगता है कहीं कोई बहुत बुरा हो गया, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके लिए वरदान ही साबित होता है. Something that you think is bad, आपको लग रहा है कि बुरा है, लेकिन अंत में क्या होता है, ये आपके लिए वरदान साबित हो जाता है. सेंटेंस समझ लीजिए. नॉट गोइंग टू द पार्टी वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. मैं पार्टी में नहीं गई तो इसके लिए मुझे बुरा लगा था, लेकिन एक तरह से ये वरदान साबित हुआ, क्योंकि आई कुड मीट माई बेस्ट फ्रेंड, जो अचानक से मेरे घर पे आ गई. और अगर मैं पार्टी में चली गई होती तो मुलाकात नहीं होती. तो एक तरह से वो वरदान हो गया कि नहीं गए और अपने दोस्त से मिल लिए. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भेष बदल के कोई आशीर्वाद आपके पास आता है. And the next is blue in the face. बहुत थक जाते हैं, exhausted. थकान के मारे चेहरा आपका उतर जाता है. You to be exhausted due to strain or anger. बहुत नाराज हैं या आप कभी exhausted हैं, बहुत थक गए हैं आप, तो you are blue in the face. Sentence देखिए. Mom looked blue in the face after the party. मतलब जब पार्टी खत्म हो गया तो इतना काम करने के बाद भी आपकी मदर एग्जॉस्टेड हो सकती है, टायर्ड हो सकती है. शी वॉज ब्लू इन द फेस. इट कैन बी बिकॉज शी वॉज वेरी एंग्री, और इट मे बी दैट शी वॉज वेरी टायर्ड. द नेक्स्ट इज मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. मतलब हिंदी में भी कहते हैं बहुत ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए कम शब्दों में मैं अपनी बात कहना चाह रही हूँ.
सो टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी, लंबी स्टोरी को शॉर्ट करके बताना चाह रहे हैं, टू से समथिंग इन सिंपल वर्ड्स इन अ ब्रीफ मैनर। सेंटेंस क्या है? He decided to cut the long story short and tell them what actually happened at the college. तो बहुत लंबी कहानी नहीं कहते हुए वो शॉर्ट में बताना चाह रहा है एक्चुअली कॉलेज में क्या हुआ था। कप ऑफ टी, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरी फोटे का नहीं है, ये मेरे बस का नहीं है, तो ये मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है। लाइक टीचिंग मैथमेटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे एरिया में है ही नहीं। सो नॉट समथिंग दैट इज पर्सन वुड डू, जो ऐसा आप नहीं करते हैं, नॉट माई, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। डांसिंग हैज नेवर बीन माई कप ऑफ टी, मतलब मैंने कभी डांस किया नहीं है, सो डांसिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। The next is beating a dead horse. Beating a dead horse. एक मरे हुए घोड़े को पीटना, क्या हो सकता है इसका? Overdoing something or an action that is pointless. फिजूल की बात को कहना, फिजूल की बात में समय बिताना जो कि उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। If a horse is dead, वो नहीं उठ खड़ा होगा। तो बगैर सोचे समझे अगर किसी बात को आप कहे जा रहे हैं जिसका आगे पीछे कोई मतलब नहीं निकलता है, overdoing something or an action that is pointless, जो कि फिजूल है, बेकार है। Sentence, she was just beating a dead horse in thinking she could change his mind. अब किसी अपने माइंड सेट बना लिया था कि मुझे ये नहीं करना है, तो दैट गर्ल वाज ट्राइंग हर लेवल बेस्ट, वो भरसक कोशिश कर रही थी कि उसका माइंड सेट चेंज कर दे, which was actually not possible. What she was doing, she was beating a dead horse. Speak of the devil. Speak of the devil, कहते हैं शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तो क्या इसका इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? Speak of the devil and the devil is here. A phrase used to refer to a person who appears as soon as they are being mentioned. जैसे ही किसी के बारे में बात करते हैं आप तो वो आ जाता है, तो आप मजाक में कहते हैं शैतान का नाम लिया, लो शैतान हाजिर। या हिंदी में हम लोग और इसको बेहतर तरीके से कहते हैं, आप आपकी उम्र बहुत लंबी है, अब अभी आप ही का नाम लिया जा रहा था। स्पीक ऑफ द डेविल्स, डेविल इज हियर। द नेक्स्ट इज लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। सोते हुए कुत्तों को छोड़ दीजिए, जगाइएगा तो फिजूल में आपको काट भी सकता है। टू स्टॉप डिस्कसिंग समथिंग दैट इज ऑलरेडी ओवर और सॉर्टेड आउट। चलिए जो बात हो गई खत्म हो गई, उसको छोड़ दिया जाए और आगे बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। द नेबर्स हैड वार्नड अस, नेबर ने वार्न किया था, टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई एंड मूव अहेड विद आवर लाइव्स। चलो छोड़ो, बेकार की बात है, चलो रात गई बात गई, अब आगे बढ़ते हम लोग। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। द नेक्स्ट इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। किसी सीक्रेट को, किसी किसी राज की बात को बाहर निकाल लेना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यहाँ पर कोई ना कैट है ना बैग है, किसी का कोई सीक्रेट है, कोई राज है जो कि आपके सामने आ जाता है, किसी के सामने आ जाता है, किसी का राज का खुल जाना। टू रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली। द डॉक्टर जस्ट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। डॉक्टर ने क्या किया? वो सीक्रेट बता दिया, वो राज बता दिया उन्होंने कि द जेंडर ऑफ द बेबी इज अ बॉय और अ गर्ल। द नेक्स्ट इज एलिफेंट इन द रूम। कोई कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम, कोई मेजर इशू, कहीं कुछ बहुत बड़ा इशू है। वी हैव एन एलिफेंट इन द रूम, मतलब कि कोई बहुत ही मेजर कोई परेशानी है जिसको सॉर्ट आउट करना जरूरी, जिसको सॉल्व करना जरूरी है। वी नीड टू फाइंड आउट द एलिफेंट इन द रूम बिफोर वी मेड अ डिसीजन। तो पहले प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट तो कर लें, प्रॉब्लम क्या है आइडेंटिफाई तो कर लें प्रॉब्लम क्या है, और फिर डिसाइड करें क्या करना है। सो एलिफेंट इन द रूम मीन्स अ ह्यूज, अ लार्ज, a controversial problem or a major concern or a major issue.
To say in a nutshell, to sum up the points and be brief. जैसा कि आप कोई speech देते हैं तो in the end you say, so in a nutshell I would like to say that communication is the most important thing a person should have before he applies for a job or before he faces the interview. To sum up, in a nutshell, the teacher asked us to quote the findings in a nutshell. Worth its weight in gold. मतलब काफी वैल्यूबल कोई चीज है, सोने में तौला जा सकता है जो. Worth its weight in gold. To be highly valuable. Every word of what you say is worth its weight in gold. Whatever you are saying, please be very careful so your words can be really valuable. The next is to weather the storm. To weather the storm का मतलब होता है to go through something very difficult. मुश्किल परेशानी से जूझ के निकल जाना बाहर. I have weathered the storm मतलब बुरी से बुरी परिस्थिति से हम बाहर निकल चुके हैं. My teacher taught me how to stand strong and weather the storm. The next is a piece of cake, something which is very easy. Solving the everyday problem was just a piece of cake. Attempting the answers for the exam was a piece of cake. It means बहुत आसान था. Get your act together. मतलब क्या होता है कि अब बस हो गया, बहुत हो गया, अब तुम कोई ढंग का कोई काम करो. To stop fooling around and do something in the way it should be done. So stop wasting time and do what you're supposed to do. Get your acts together. It is time you had it is sorry, it is time you get your acts together and do something useful. बहुत time waste हो गया, बहुत इधर उधर इधर उधर. No, stop that. Now get your acts together. अब कायदे से चुपचाप बैठ के पढ़ो. To cost an arm and a leg, something which is very 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 costly. जैसे हाथ पैर काट के बेचना पड़ा, वो इतना कॉस्टली था कि आपको अपने हाथ पैर ही काट के बेचने पड़े. अब कोई हाथ पैर नहीं काटता है, लेकिन the idiom says that something is very costly, very extremely expensive, बहुत ही महंगा है. To cost an arm and leg, you should refer to something that is extremely expensive. I think it will cost an arm and leg to get the car my brother wants. मेरा मेरे मेरे भाई को जो गाड़ी पसंद आई है उसके लिए तो it will cost an arm and a leg. The next is on top of the world, to be in a very happy mood. Today I am on top of the world. It means you are very happy. A state of extreme happiness. Vishal seemed to be on top of the world since he heard the news of his son's promotion. The father was very happy. Vishal seemed to be on top of the world since he heard the news of his son's promotion. We have heard so many times, time is money. To work quickly in the time that is left. मतलब थोड़ा समय बच गया है और उस टाइम को आप अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं. Time is money. The manager encouraged the employees to realize that time is money and work harder. Get out of hand का मतलब होता है अभी हाथ से निकल गया, अभी ये out of control हो गया. Before things get out of hand, you must control it. When something gets out of hand, not in one's control anymore. The situation has gotten out of hand and there is nothing anyone can do to help. Like two peas in a pod, somebody who is very close. अब pod में जैसे मटर के दाने होते हैं, उसमें अगर छीलेंगे तो सब एक साथ निकल जाते हैं. तो they are all very close.
तो दो पर्सन जब आप बोलते हैं दे वी आर लाइक पीस इन अ पॉड, मतलब वेरी क्लोज टू इधर, वेरी क्लोज, to be together always. My cousin and I are always like two peas in a pod. To know which way the wind blows, to understand what is happening, to be aware of the situation, kahan par kya ho raha hai, you are aware. So you know which way the wind is blowing. As a student, you are always obliged to learn which way the wind blows and then make a statement. You must be aware of what is happening around you. Hit the nail on the head. To hit the nail on the head means to do something exactly the way it should be done. जैसा करना चाहिए, to do exactly what is expected of you. He hit the nail on the head with his decision to move to Delhi. मतलब उसने correct decision लिया. He took the right decision. Catch more flies than money. Catch more flies with honey than you can with vinegar. मतलब किसी बात को अगर प्यार से कहते हैं आप तो मान ली जाती है, और नाराज होकर कही जाती है तो वो बात शायद बने नहीं. Getting what you want to be done in a very nice way by being nice. अगर आप अच्छी तरह से बात करते हैं तो काम आपका हो सकता है, और अब झल्ला करके खींच करके गुस्सा होकर बात करते हैं आप तो शायद आपका काम नहीं हो पाए. If you ask politely, you may be able to catch more flies with honey than you can with the vinegar. अब विनेगर का टेस्ट क्या होता है, हनी का टेस्ट क्या होता है, मतलब अच्छी जुबान से आप बहुत कुछ करा ले सकते हैं, और कड़वी जुबान से तो आप कुछ भी नहीं करा पाएंगे. Let someone off the hook, मतलब किसी को छोड़ देना, किसी को रिलीज कर देना. The teacher decided not to punish the child and she lets him out of the hook. Let him off the hook, मतलब छोड़ दिया उसने. The court decided to let the guy off the hook as there was no evidence proving his crime. किसी को रिलीज करना, let someone off the hook. Like riding a bicycle, a skill that you learn and will never forget. When you're very young, you learn, you fall, but then you never fail. So like riding a bicycle, it means a skill you learn and probably you're not going to forget. Learning a language is like riding a bicycle. You will never forget it. This was all for today, and we'll come back again with part 3 and part 4. The more, the merrier. जितनी अधिक आप वोकैबुलरी अपडेट करेंगे, जितनी अधिक आप idioms and phrases जानेंगे, उतने ही अधिक आपको फायदा होगा, right? So expressions will always be handy for you. Learn it, use it, and don't ever forget it. That's all for today. Take care.